द Realme 12 Pro Plus। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन और कुछ और भी आपको इसके बारे में बताएंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग बिकॉज कई लोग तो आधा घंटा अनबॉक्सिंग वीडियो ही देख लेते हैं। सो वी कैन डू इट वेरी नाइसली, वेरी ब्यूटीफुली, वेरी एस्थेटिकली। सो लेट्स अनबॉक्स। पप्पू ब्लेड देना। Oopsie. आहा। वाओ वाओ। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मज़ा ज़रूर आता है फ़ोन को पहली बार खोलने में, बिकॉज यू कैन ओनली डू इट वंस। बार बार तो आप कर नहीं पाएंगे। वेल, द येलो बॉक्स एंड व्हाट इट सेज इज द हाईलाइट ऑफ दिस फोन is the Periscope Portrait OIS camera powered by Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset, Sony IMX890 OIS camera and 120Hz of curved vision display. All right, पहली मेहनत। इसके अंदर आपको मिलना चाहिए थोड़ी बहुत लिटरेचर, क्विक स्टार्ट गाइड अगर आपको समझ में ना आए फ़ोन को कैसे खोलना है। आपको ये भी मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट while changing SIMs. एंड यू ऑल्सो गेट अ कवर, सो रियल गुड। आजकल मिलते नहीं है, इनफैक्ट आजकल तो आपको पावर अडेप्टर भी नहीं मिलता है, कुछ फ़ोनों में तो चार्जर भी नहीं मिलता। ओके, सो ये रहा Realme 12 Pro Plus। ओह, लुक्स गुड। एंड ऑफ कोर्स जैसे आप निकालेंगे पहली नज़र आपकी जाएगी पीछे की तरफ। या दिस इज व्हाट दे कॉल luxury watch design. Looks like a dial, right? Looks really beautiful. In fact, I'd be really happy अगर Realme अपनी किसी आने वाली स्मार्ट वॉच में इस प्रकार का अगर डायल दे दे। I think it's gonna look really killer. And बैक की अगर बात कीजिए, आप फील करेंगे थोड़ा लेदर का फील आ रहा है, और कंपनी कहती है कि इट्स नो ऑर्डिनरी लेदर, ये है वीगन लेदर। सो फॉर ऑल द वीगन पीपल दिस इज द फोन। एंड पीछे से सामने की बात करें तो आपको मिलता है 6.7 इंच का डिस्प्ले। कर्व्ड विजन डिस्प्ले को कहते हैं बिकॉज आप साइड में देखें तो इट्स नाइसली कर्व्ड, लाइक द फिनिश ऑफ इट। पकड़ने में काफ़ी सॉलिड लग रहा है। इट्स अराउंड 190 ग्राम्स, 192 टू बी प्रिसाइज। सो इट हैज़ अ वेट टू इट, एंड बिकॉज ऑफ ये आप जो कैमरा सेटअप देख रहे हैं तो सामने की तरफ वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट आप पकड़ सकते हैं। प्लीज़ आपका कैमरा स्मज नहीं होगा बिकॉज ग्रिपिंग एरिया जो है वो आराम से नीचे की तरफ होगा, सो शुड बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बस ये आएगी कि अगर आप कवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लेंस थोड़ा प्रोट्रूड कर रहा है, तो स्क्रैचेस थोड़े पड़ सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, एंड स्पेशली बिकॉज इट्स द हाईलाइट, इट्स द यूएसपी, द कैमरा सिस्टम, द लग्जरी वॉच डिज़ाइन। ओके, जब तक फ़ोन पावर ऑन होता है तब तक देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी यार। बॉक्स में काफ़ी कुछ दिख रहा है काफ़ी समय बाद। Oh, you have the 67 watt super whoop charger, yeah? So that's good, thank you. And of course you get the charging cable. Nice, type C. So good. That's it. और कुछ नहीं मिलेगा, पर जो भी है काफ़ी कुछ है। चलिए इस सामान को करते हैं साइड और थोड़ी फ़ोन के बारे में और कुछ जानते हैं। तो फ़ोन के लुक्स के बाद अब बात करते हैं द लग्जरी वॉच डिज़ाइन, हार्डवेयर की, बिकॉज ऑफ कोर्स फ़ोन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको यूज़ करने के लिए उसके लिए हार्डवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। और पावरिंग दिस फोन इज द Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset, which means the performance is going to be super smooth. It's a reliable chipset, so multitasking is going to be smooth. You open your apps, do whatever you feel like, play games, because you have a 120 GHz refresh rate. So all that combined, you should have a great experience. There's also 12 GB of RAM plus 12 GB of dynamic RAM as well, so that's great. And storage wise, there is 250 GB of storage, which is ample. I mean, it's a lot. You save your images, dump your videos, do whatever you feel like, man. It should suffice. Besides that, it's running on the Android's latest Android 14 version, and they have their own UI, the Realme UI 5.0. It looks good. I mean, it's smooth. I mean, looks are obviously subjective, but this is something that you get used to. Not too much of bloatware, but you have your essential apps that you will be using daily, like LinkedIn and Netflix. So yeah, besides that, you have the whole gamut of apps that can come handy and download whatever you feel like from the Google Store. Powering this phone is of course a 5000 mAh battery, जो कि काफ़ी है। मतलब
it should easily last you the day. So, and you have the 67 watt charger also. So, quick charge, कोई problem नहीं होने वाली है. And yeah, like I said, the USP, मतलब the luxury watch design, the camera is the USP, and इसमें आपको मिलता है periscope portrait camera, right? And also the Sony IMX890 OIS camera. It's gonna mean that you are gonna click some great pictures. Yeah, get ready for that. In fact, portrait pictures, the company claims, are gonna be like all cinematic experience. Alright, a quick recap. The Realme 12 Pro Plus comes with this beautiful design. It's called the luxury watch design, right? The back is really good. Vegan leather, so it's for everybody. I like the look and feel. The touch is great. 6.7 inch of display, 120 hertz. Gigahertz of refresh rate, that's amazing. Powered by a Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset, 12GB RAM, 256GB of storage, and of course the ultimate highlight is the camera, luxury watch design that comes with a periscope portrait camera and the Sony IMX890. It's gonna be a great experience. Price, very competitively priced, and yeah, Realme has proved himself in this segment. They are the king, and yeah, the Realme 12 Pro Plus with luxury watch design.